Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to our chapter number 1, nutrition in plants in standard 7. In the previous lecture, we studied about the saprotrophs, which is called the saprotrophs. Saprotrophs make their own food on the attract with the dead animals and plants, and they decompose it and converted in the carbon form. It is called the saprotrophs. Now we are going to discuss about the symbiosis, which is called the symbiosis. Some organisms live together and share their shelter and nutrition. This relationship is called the symbiosis. Symbiosis means क्या है, जो some organisms है वो जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर, अपना शेल्टर और न्यूट्रिशंस दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द सिम्बायोसिस. अगेन आई एक्सप्लेन यू, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं. दे शेयर देयर शेल्टर्स एंड न्यूट्रिशंस टू ईच अदर. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस. नाउ एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, सर्टेन फंगी लिव इन इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट. कुछ जो फंगी से प्लांट रूट में रहती है. प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न. तो प्लांट से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन फंगस को प्रोवाइड करता है और रिटर्न करता है. फंगस क्या करता है, उसको रिटर्न में फंगस उसको वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है. किसको, प्लांट्स को. प्लांट्स को फंगस न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करता है और प्लांट्स को क्या, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है. नाउ विच इज कॉल्ड द लिचन्स. लिचन्स आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कंपेयर ऑफ फंगी एंड आल्गी. जो लिचन्स है, इट इज ए वन टाइप ऑफ ग्रुप. ये क्या है, कंपोजिट कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी एंड आल्गी. बिकॉज ऑफ fungus is a saprophyte, means it is a group of it comes from the group of saprotrophs. Because of they depend on death animals and they decomposed it. Fungus is saprophyte and algae is autotrophs. Autotrophs means there are chlorophyll presence in algae, so it get the photosynthesis process and make their own food. So algae is known as the ऑटोट्रॉफ्स. फंगस सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल. फंगस क्या करता है, अलगी को वाटर एंड मिनरल सप्लाई करता है. तो उसके बदले में अलगी क्या करता है, अलगी वाइल द सप्लाई फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस. अलगी it comes from the group of autotrophs because there are presence in algae is a क्या प्रेजेंस है उसमें, प्लास्टिड्स. कौन सी प्लास्टिड्स है, क्लोरोफिल. सो दे मेक देयर ऑन फूड, सो इट इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. और फंगस क्या है, सेप्रोफाइट है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द लिचन्स. अगेन आई एक्सप्लेन यू विच इज कॉल्ड द सिम्बोसिस. सम ऑर्गेनिज्म्स लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड nutritions. This relationship is known as the symbiosis. Certain fungi live inside the root of the plant. It is an example of the symbiosis relationship. Plants provide nutrition to the fungus and in return fungus provide the mineral and water to the plants. Now I explain you which is called the lichens. Lichens are composite organisms composed of fungi and algae. Because fungus is a saprophyte, because it is a comes from the group of saprotrophs. They are depend on the dead animals and decomposed it and make in convert in carbon form. And algae is autotrophs because algae get a photosynthesis process and get their own food due to the presence of chlorophyll. Fungus supply water and minerals to the cell and algae while supply food prepared by the photosynthesis process. It is a group of the combination of fungi and algae is known as the lichens. If anybody have any problem regarding this chapter nutrition in the plant, then ask in comment box. I will try to ask question in comment box. Have a nice day. In the next lecture we started our new chapter. Have a nice day.